सर आपने रिकॉर्डिंग अभी शुरू किया? हाँ बेटा. Short circuit occurs when a naked live wire and a neutral wire comes in contact, or the live wire and the earth wire come in contact. Its major cause is poor insulation on wire. Short circuiting is what? Either live wire gets in contact with neutral wire or earth wire. That creates short circuit. The reason for short circuit is poor insulation. Page number 146. Do you know? Overloading of an electric circuit is a condition when it draws more current than it is designed for. Overloading is a situation when you are drawing extra current. Extra current means if your circuit is rated or your wires are rated to function at suppose just 10 ampere, and because of certain reasons you are drawing a current greater than 10 ampere, then your circuit is said to be overloaded. It will heat up very fast and may burn, ठीक है, or may catches fire. Because of overloading, the heat produced in wires become very high and that may cause fire. Is that okay? Very good. समझ में आया? Earthing is done in a house near the kWh meter. So earthing generally done at kW, near to kWh meter. The reason is pretty simple. kWh meter से ही सारा इलेक्ट्रिकल सप्लाई आपके घर में आ रहा है. अर्थिंग वायर हर जगह पे कनेक्ट किया सारे अप्लायंस से आपने, और उसको कलेक्ट करके आप फिर से मीटर के पास लेकर के आ जाते हो और वहां से अर्थिंग करते हो. अदरवाइज अगर सारे अप्लायंसेस का आप अलग अलग करोगे, दैट इज वेस्ट ऑफ एनर्जी. वेस्ट ऑफ एनर्जी मतलब वेस्ट ऑफ मनी. हर जगह पर वायर ग्राउंड में अगर डालते हो तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट ट्रबल फॉर अस ओनली. What we do, we collect all the earthing exposures to one place at meter and then we put it into earthing. Is that okay? Power rating of appliances. Generally, an electric appliance such as electric bulb, geyser, heater, etc. is rated with power and voltage. For example, an electric bulb is rated as 100 watt, 220 volt. 100 watt, 220 volt. It means that if the bulb is lighted on a 220 volt supply, if it is lighted on a 220 volt supply, it will consume 100 watt electrical power. That is, 100 joule of electrical energy is consumed by bulb in 1 second. Or in other words, 100 joule of electrical energy is converted in filament of the bulb into light and heat energy. Is that okay? So what does a 100 watt bulb means? It is per second converting 100 joule of electrical energy into other forms of energy. Is that okay? Heat and light in case of bulb. अगर फैन चला रहे होंगे तो kinetic energy and heat energy. From the power rating of an appliance, we can find the safe limit of current which can flow through that appliance. ठीक है? Through the power rating, we can find the safe limit of the current, and it is related through P is equal to VI. P is power rating, V is voltage, and I is current. फिर से P is power rating, V is voltage, and I is current. और करंट की लिमिट हमको चाहिए थी पावर रेटिंग indicated by P is equal to potential difference V
into I into current I. पावर रेटिंग का फॉर्मूला कहाँ लिखा है? इधर लिखा है ना। पावर रेटिंग का फॉर्मूला नहीं होता है बेटा, ये आपके अप्लायंस के ऊपर मार्क्ड होता है. इज दैट ओके? वो जैसे 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार वैसा. It is marked over the appliance. जैसे 3 स्टार वैसा. नहीं बेटा, प्रॉपर लिखा रहता है दिस मच वॉट. ठीक है. So current will thus become, current I will be equal to power rating P for current I. हेलो. तो आप वहां से इधर आइएगा ना गेट के पास. नहीं, डाउन के नहीं, बस वहीं पर आपको गाड़ी को रख के और इधर आना पड़ेगा. मतलब चेयर से इनको लेके चलने में हेल्प करना होगा. ये एक्सिस बैंक से, मतलब वो जो कंपाउंड में एक्सिस बैंक है ना, उसी में अंदर आपको आना है. 5 नंबर शॉप में. हाँ, ग्राउंड फ्लोर 5 नंबर शॉप. क्लासेस है. हाँ, साइंस एकेडमी. साइंस एकेडमी. So science. So power rating is basically marked on our appliances. Apart from power rating, दूसरी चीज जो marked होती है, that is operational potential difference, or the maximum potential difference on which a appliance can operate, is that is also marked on our device which we are using. ठीक है. Using these two, we can calculate the safe current. ठीक है. ये दोनों मार्क्ड रहते हैं, ये भी मार्क्ड रहता है, और इसके बेसिस पर सेफ करंट लिमिट इज फाउंड. सेफ करंट लिमिट को अगर हम ब्रीच करेंगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? A lot of heat will be produced in our appliance, and that may lead to fire. Is that okay? So I'll just write it down. If you guys want, you can note it down. F आदित्य क्या कर रहा है? मैं रास्ते को आदित्य क्या कर दिया तूने? देखो आदित्य ने किया. क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया तुमने. सुबह स्क्रिबल कर दिया तूने. If कब? our appliance draw a current greater than
safe current appliance के बाद क्या लिखा है? current limit it will lead to large hitting of lead to large hitting of effect and may lead to fire. Is that okay? Safe limit of current for an appliance is I, which is power of the appliance upon voltage at which it works. We have already discussed it. For example, for a bulb rated 100 watt, 220 volt, the safe limit of current is 0.545 ampere. 100 divided by 220, that becomes 0.45 ampere. The table alongside gives the power rating of some common appliances. First one, car filament bulb, it's 20 watt and 12 volt. So इसका current limit क्या है? 20 by 12, which becomes 10 by 6 or 5 by 3 or 1.67. 1.67 ampere. Is that okay? The next one is electric bulb, which is between 15 watt to 200 watt and it operates at a voltage of 220. So the safe limit is going to be 15 watt के लिए 15 upon 220 and 200 watt के लिए 200 upon 220. Is that okay? The next one is fluorescent tube 40 and 220. This is 2 by 11 or 0.18 ampere. Electric fan के लिए 60 to 100 watt by 220, 60 by 220 to 100 by 220. That is the limit. And so on and so forth. We can calculate the current limit of any of the devices. Electric oven के लिए it's 3000 by 220. This will make it 300 by or 150 by 11, which happens to be approximately 11 ampere current. ठीक है? In our country, AC is supplied at a voltage of 220 volt and frequency क्या होती है? करंट सप्लाई की फ्रीक्वेंसी क्या होती है एसी सप्लाई की इंडिया में? फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने, आई थिंक 50 हर्ट्ज. ठीक है? काइंडली रिमेंबर दिस, यू मे बी आस्क्ड एनीवेयर. ठीक है? AC is supplied in India at AC supply in India 50 hertz. 50 hertz. Okay. Household consumption of electrical energy. Every home using electricity has an electric meter which measures the amount of electrical energy consumed in that home over a given period of time. The electrical meter is fixed at mains board or just outside our house. The electrical energy is sold in the unit of kWh. It is also referred as commercial unit. It is the unit in which consumer pays the cost of electricity. Just underline, electrical energy is sold in unit of kilowatt hour.
kWh is also referred as commercial unit of electrical energy. The electrical energy consumed by an appliance in a certain time can be calculated in kWh by using following relations. Energy in kWh is equal to power in kW multiplied by time in hour. ठीक है? Units of kWh or energy in kWh is equal to power in kilowatt into time in hour. पावर हमेशा किलोवाट में होगा जरूरी नहीं है. इट विल मोस्टली बी इन वॉट. देयरफॉर किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? विल डिवाइड इट बाय 1000. सो पावर इन वॉट बाय 1000 is equal to power in kilowatt. Is that okay? Time in hour. Time in hour is equal to, अगर time in seconds दिया हुआ है या minutes दिया हुआ है तो accordingly हम hours में convert कर सकते हैं. So time in hour is equal to time in minute अगर दिया हुआ है divided by 60. ठीक है? और time in second divided by 3600. हाँ हाँ दे दूँ. स्कूल में गिरे दिए हो. तो स्कूल लेके आओगे? हाँ लेता. लेट के? हाँ लेट लेते आओगे तो अच्छा रहेगा. आगे का रिटर्न कर दूंगा आपका. ओके, इज दिस ओके? टाइम को मिनट में है तो उसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया. सेकंड में है तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड किया. टाइम हमको आवर में चाहिए और पावर हमको किलोवाट में चाहिए. यस बेटा. 3600 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि सेकंड 1 घंटे में 3600 होते हैं. यस बेटा. ठीक है. Thus total energy consumed by an electrical appliance in kWh can be calculated by multiplying its power rating in kW with time duration in hour for which it was in use. The cost of electricity will then be product of energy consumed in kWh with rate in rupee per kWh. और लिखा है बेटा. or. ठीक है. अभी क्लियर है? अभी भी नहीं है. The next thing is if an electrical oven of power 3 kilowatt works for 2 hours per day, the electrical energy consumed by the oven per day will be 3 kilowatt into 2 hours, which is equal to 6 kWh. While total electrical energy consumed in a month of 30 days will be 3 into 2 into 30, which is 180 kilowatt hour.
the cost of electricity at the rate of 6.25 per kWh will then be 180 kWh into 6.25, which is equal to 111 rupees, sorry, 1125 rupees, 1125 rupees as mentioned here. So suppose अगर हम ये ओवन के बदले कुछ और चीज लेते हैं, जैसे मान लो हम फैन चलाते हैं, ठीक है, 750 रेटिंग का है, 750 वॉट पर डे, हम 8 आवर्स चलाते हैं फॉर 30 days. So how much kWh will be consumed? Number one. And second thing, if the energy is at the rate of 7.5 rupees per unit, ठीक है, what will be the total cost? हाँ, आप लोग को करना है, या फिर एक मैं करके बता देता हूँ फिर से, नहीं मैं कर देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग करिएगा. हाँ बोलो, क्या तो करो. मत करना, सबको आता है, तो मुझे शादी नहीं. मतलब नहीं ठीक है, खुद करना है सो. हाँ तो तुम करो ना, तुमको मना तो नहीं किया है. बदहाल है. So what are we going to do first is, this has to be converted into kW and then multiplied with the total number of hours in the month, 8 per day, that is 8 into 30 hours for entire month, and this is now in kilowatt. So the product of these three things is going to give me the total energy consumed in kWh. This will be 3 and 4 and 2. It is again 180. 3 into 2 into say 30. That is 6 into 30. That is 180 kWh. Is that okay? 180 kWh. आपने 1000 से उसको डिवाइड नहीं किया है. हाँ, और फिर total amount which we will have to pay is 7.5 into 180. This will become 18 into 75, which is 1350. Is that okay? Are we getting this? Please take it down. Find the consumption. There is an activity. Find the consumption of electrical energy. List the electrical appliances such as bulb, fans, air conditioner, heater, oven, refrigerator, washing machine, etc., which are 1350. Right. Washing machines, etc., which are used in our house in a day. Write the power rated on these appliances and time duration of their use, and thus calculate the energy consumed by day on daily or monthly basis. नहीं, there is a activity in our book, टेबल बनाया हुआ है, उसमें अपने घर के अप्लायंसेस का नाम, उनका रेटिंग, पावर रेटिंग, कितने देर यूज करते हो ऑन एवरेज डेली बेसिस पर, उसके बेसिस पर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन निकालना है. KWH के टर्म्स में सबको ऐड करके डेली का कंजम्पशन निकालना है, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मंथली. So that is what we have to calculate and get it checked by the concerned teacher. Is that okay? Very good. क्या हुआ? नहीं बेटा, घर के अप्लायंसेस घर पे ही देख पाओगे ना. अच्छा, तुमको याद है, उनका पावर भी याद है. गुड. जैसे आपके पास क्या क्या है, एक एसी होगा, उसका पावर रेटिंग क्या है बेटा? ओवन का रेटिंग क्या है? नहीं, उस टेबल को मत देखो,
तुमको अपने घर वाले एसी का नोट करना है, ठीक है? सर मुझे टेबल पे लिखा है लिखा होता है बेटा, पढ़ना पड़ता है उसके लिए। सर। एसी के ऊपर लिखा होता है वारंटी। ऑब्वियसली मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी, या सबके घर में मैं जाके करूँ? नहीं सर, हम ऐसे नहीं करेंगे। एसी का छोड़ देना, नहीं एसी का भी रहता है, यू जस्ट हैव टू लुक एट इट। राइट साइड में उसका एक पर्ची चिपका रहेगा या लेफ्ट साइड में रहेगा, उस पे कोई बात। टीवी पर भी लिखा रहता है पीछे के साइड में, फैन पे भी लिखा रहता है, मेरे को याद नहीं। सारी चीजों पर लिखा रहता है। आपको चढ़ चढ़ के उसको देखना तो इसमें मैंने लिखा होगा या फिर इसके डब्बे पर देखना होगा। सर। डब्बा अमेज़न पे मिलेगा बेटा। सर यार डब्बा आप लोग क्यों मंगाएंगे? अबे अपने घर का ढूंढ लेना ना। आपके घर में जो भी अप्लायंस है उसको अमेज़न पे जाकर के ढूंढ लीजिए, उसके डब्बे को करिएगा फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो उस पे लिखा रहेगा उस अप्लायंस का पावर रेटिंग क्या है, ठीक है? प्रोडक्ट की पिक्चर होती है, डब्बे की पिक्चर नहीं होती है बेटा, अगर आप ध्यान से देखेंगे। सर मेरे को याद नहीं, ठीक है? तो मेरे घर पे शायद 600 वॉट्स का है। देखिए जिसके घर पर भी जो है उसका आपको नोट करना है, अगर आप लोगों को इच्छा है तो, नहीं तो कम से कम क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है? वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। हजार्ड्स or dangers of electricity. Apart from a number of its uses, there are some hazards too with the electricity which are given below. The first one, when you use a number of electrical gadgets connected in a circuit at the same time, a heavy current flows through the connecting wires. In other words, the house circuit gets overloaded. There will be a overheating of electrical wire which may cause short circuiting and even electric fire. ठीक है? So आप यहाँ पर एक वर्ड overloaded अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद overheating of the electrical wires cause short circuiting and even electric fire. So क्या क्या हाईलाइट करना है? Circuit gets overloaded, क्यों? A heavy current flows. Circuit gets overloaded. A heavy current flows. Circuit gets overloaded. Overheating of electric wires सर आप कुछ लिख रहे हैं? may cause short circuiting and even electric fire. नहीं बेटा, अंडरलाइन करने के लिए बोल रहा हूं। A heavy current flows, circuit gets overloaded, overheating of electric wire may cause short circuiting and even electric fire. Are we able to locate it? Very good. Yes sir. Sometime, due to poor insulation of wires, the live wire touches the neutral wire. The live wire touches the neutral wire. This causes short circuiting and flow of current become excess. इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं। Due to poor insulation, the live wire touches the neutral wire, causes short circuiting and flow of current become excess. इसके बाद अगला चीज, damages the electrical appliances. ठीक है? Heavy current is always going to damage our electrical appliances.
Even wire catches fire and there can be mishaps in form of electric fire. If a person comes in, अच्छा electric fire में कभी भी water का use नहीं करना चाहिए. Just a reminder. If there is a fire due to electric short circuit, we must not use water. ठीक है? If a person comes in contact with a live wire, he gets an electric shock. If it is a huge shock, it can cause death. ज़्यादा strong current रहेगा, it may lead to our death. Precautions to be taken while using electricity. Right, पिछली बार सिखा दिया था. एक बार पढ़ लेते हैं इसको, सारे लोग अपने मन में फटाफट इसको रीड कर जाओ. All of you just go through precautions to be taken while using electricity in your mind. And by that time, I'll be taking up the examples. We'll be doing the solved examples. Yes, beta. You can ask. कर लिया सर. वो एसी के कारण तो एसी में शॉर्ट सर्किट सर हाँ बेटा. कर लिया. Very good. You are so fast and so intelligent. Wait for some time. ओए, डाउट तुम लोग का बाहर निकलेगा कि आपस में बात करने का? So basically the doubt is first floor पे जो आग लगी थी, it was because of the AC शॉर्ट सर्किट okay. हाँ, तो उसमें मैं क्या करूँ ये बताओ. फायर ब्रिगेड आया और उसमें पानी डाला था. How does that make sense? ने फायर ब्रिगेड वालों ने पहले इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद कर दिया होगा, उसके बाद पानी डाला होगा. तुम लोगों जितना वो चालाक नहीं है ना कि आटे के साथ पानी डालने लगेंगे. ठीक है? Is that okay? हुआ कि बड़ा ऑफिस अगर पास से देखो ना तो ऐसा इधर से ज्यादा और इधर से कम. अच्छा, हम लोग का स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी चालू हो गया है. सर मिसने बोला अभी को इलेक्ट्रिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं करवाएंगे. क्यों? उन्होंने बोला कि टर्मिनल्स में उनको श्योरिटी नहीं है कि वो उनका वो- आएगा या नहीं. तो मैम ने बोला है पहले हम ये इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद अगर टाइम बचता है तभी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, वरना नहीं करेंगे. ठीक कोई है, और तो से शुरू करेंगे. न्यूमेरिकल तो मैं अभी करा देता हूँ. और तीनों में मतलब क्लास कितने बजे एंड होगी? मुझे बाहर जाना है डॉक्टर के पास. 15 more minutes. ओके 15. 3 घंटे और पढ़ाऊंगा. 3 मिनट और. I don't know. 3 मिनट और. Very good. Let us. आप सारे लोगों ने पढ़ लिया जो वर्क दिया था मैंने? Awesome. Now let us concentrate on the board. We'll be taking up numerical problems right now. Next lecture में बाकी के questions करेंगे. हाँ, तूने ही 16 पे आके चालू किया था. तो सबसे पहली जो चीजें नोटिस करनी चाहिए वो नहीं करती है तो फिर तुझे ही ठंडी भी लगेगा. सर एसी ऑन कर दो, पर उसका नंबर नहीं टेंपरेचर
कोई बात नहीं है, अभी होल्ड कर लो थोड़ी देर, मैंने बढ़ा दिया टेम्परेचर। खट्टे को करता ना Sir, थैंक यू यस सर, अरे यार any problem? I'm explaining it again. There is a battery having potential difference 12 volt and a current of 2 ampere. Flows through a wire for 30 minutes. Find the electrical energy supplied by the battery. So we take a note of all the variables. Voltage, potential difference is equal to 12 volt, PD, 12 volt. Current is 2 ampere and the time is 30 minutes, which can be converted into seconds by multiplying it with 60, or it can be converted to hour by multiplying it with dividing it by 60, making it half hour. Is that okay? The energy is then going to be power into time. Power is equal to potential difference into current into time. Sanaya, 12 into 2 into 1800, that will make 43,200 joules. Or, so this could be one solution, or it may be expressed in another unit called kWh. And for that, what we have to do is, we have to divide 12 into 2, which is in watt, 5,000 to make it kilowatt, and then multiply it with 0.5 to make it kWh. This comes out to be 0.12 kWh. Sorry, 0.012 kWh. Power spent is going to be simply potential difference into current, which is 12 into 2, that is 24 watt. Is that okay? The next thing is, an electrical heater is rated. An electrical heater is rated at 1.5 kilowatt, 220 volt. .5 watt, kilowatt rather, and 220 volt. The first thing we need to find is safe current which can flow through it. The safe current which can flow through it, I safe, is equal to power upon potential difference, which is equal to 1.5 into 1000, that is watt, divided by power potential difference in 220 volt. This makes it, this is gone, this will be 150 by 22 or 75 by 11 ampere. Is that okay? Which can solve to be equal to 66, 9, 88 and approximately 2 amperes. 6.82 amperes. Can fuse of current rating 5 ampere be used with it? No. Why? Current is already greater than 5 ampere. If we are going to use a 5 ampere fuse, it is always going to burn. Is that okay? So we require a fuse of at least greater than 7 or greater than 7 in order to perfectly operate this appliance.
Are we getting this point? Yes. So can fuse of 5 ampere work for it? No, it will not work. Is that clear? B. No, it will not work as current in circuit. Is already greater than 5 ampere. What must be the current rating of the fuse? It should be greater than 6.82. Anything greater than 6.82 rating का fuse रहेगा, ampere rating का fuse रहेगा, that can work with this. Is that okay? Are we getting this point? ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं.